રાજ્યમાં વરસાદની વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યમાં વરસાદ અંગે હવામાન વિભાગ દ્વારા એક મહત્વપૂર્ણ આગાહી કરવામાં આવી છે। આગાહી પ્રમાણે રાજ્યમાં ફરી એકવાર વરસાદનો રાઉન્ડ શરૂ થવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તે અંતર્ગત ગુજરાતમાં સામાન્ય વરસાદની આગાહી છે। અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાયેલું રહી શકે છે તો 11 અને 12 જુલાઈના રોજ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા પણ સૂચના આપવામાં આવી છે। આપણે જણાવી દઈએ કે અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં સરેરાશ 162.5 મિલીમીટર જેટલો વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે તો 13% ઓછો વરસાદ થયો હોવાનું પણ અનુમાન છે। રાજ્યમાં સરેરાશ 187.2 મિલીમીટર વરસાદ થવો જોઈએ। तेरे संवाददाता आयुषी याज्ञिक अत्यारे आपणी साथे जोड़ायेला छे। आयुषी, अत्यारे मेघराजाए जाणे के विराम लीधो छे परंतु मोटाभागना विस्तारोमां वादळछायुं वातावरण छे, त्यारे अनुमान शुं लगाववामां आवी रह्युं छे वरसादने लईने के क्यारथी फरी एकवार बीजो राउंड शरू थशे ने अत्याરની સ્થિતિને લઈને શું અપડેટ મળી રહી છે? दीपाली जे रीते अलग अलग वरसादी सिस्टमों जो सक्रिय थी तेनाथी गुजरात राज्यनी अंदर खास करीने दक्षिण गुजरातनी अंदर जळबंबाकारनी स्थिति जे छे ते सर्जाई हती, जो कि हाल तमाम सिस्टमों नबળી पड़ी गई है और हवे अरबी समुद्रनी अंदर जे नवी सिस्टमों बनी रही है त्यारबाद राज्यनी अंदर वरसादनी आगाही करवामां आवी रही है, जो कि ते पहला सामान्य छूटोछवायो वरसाद गुजरात राज्यना अलग अलग भागोमां पड़ी शके छे, जेमां सौराष्ट्र કેટલાક भागोनी अंदर सामान्य वरसादनी आगाही करवामां आवी छे। माछीमारोने पण दरियो न खेडवानी सूचना आपवामां आवी छे, कारण के अरबी समुद्रनी अंदर जे रीते वरसादी सिस्टमों हवे सक्रिय थशे, आ सिस्टमोना कारणे दरियो छे तो तोफानी बनी शके छे, जेने लईने माछीमारोने दरियामां न जवानी सूचना आपवामां आवी छे। मध्य गुजरातनी अंदर वादळछायुं वातावरण रही शके छे, अमदावादमां पण वादळछायुं वातावरण छे ते रहे तेवी संभावनाओ छे ते व्यक्त करवामां आवी छे अने आ अलग अलग वरसादी सिस्टमोना कारणे आ आगामी 3 થી 4 દિવસ સુધી सामान्य वरसाद रहेशे, जो कि त्यारबाद 13 जुलाई बाद फरी सारी एवी वरसादी सिस्टम छे તે સક્રિય થશે અને ત્યારબાદ ભારે વરસાદની પણ સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। દીપાલી જી આયુષી, આભાર માહિતી આપવા બદલ। તો રાજ્યમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, પરંતુ અત્યાર સુધીમાં જે વરસાદ વરસ્યો છે તેમાં 13%ની ઘટ જોવા મળી રહી છે। જે આંકડાઓ સામે આવ્યા છે તેને વરસાદને લઈને ચિંતા ઊભી કરી છે, પરંતુ હવામાન વિભાગનું કહેવું છે કે આગામી દિવસોમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામશે। फोरकास्ट है 10 से 16 जुलाई तक अलग अलग स्थानों में हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा अगले 7 दिन। इसमें मेनली आज और कल पूरा गुजरात में संभावना रहेगा। उसके आगे 12 से लेकर 16 तक दक्षिण गुजरात की जो जिला है और सौराष्ट्र की जो दक्षिणी भाग की जो जिला है इसमें अलग अलग स्थानों में हल्का से मध्यम बरसात का संभावना रहेगा। अभी कोस्टल क्षेत्र में हमारा जो पवन का दिशा है मेनली दक्षिण पश्चिम दिशा से पवन चलने का स्थिति रहेगी और स्पीड जो रहेगा 15 से 20 नॉट गास्टिंग टू 25 नॉट तक होने का संभावना रहेगा। और डे 2 और डे 3 में फिशरमैन भाई के लिए वार्निंग दिया गया है। 11 और 12 जुलाई को स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट के कारण स्क्वेली विंड है, इसमें जो स्पीड रहेगा 45 टू 55 किलोमीटर प्रति घंटा